Hello and welcome to BrainBridge UPSC. I am Vaibhav Kulsresht and this is Answer Writing Program Series for Indian Economy GS Paper 3. And this is the 10th question of this series. The question is inclusive growth possible under market economy? Then second part, state the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. This question was asked in 2022. So in answer format, we can write the first part of this question in introduction. That is inclusive growth possible under market economy or not? ठीक है, तो यहाँ पहले इंट्रोडक्शन में हम आ जाते हैं. इंट्रोडक्शन, inclusive growth possible in market economy. We will write about it in introduction part. Then in introduction, or you may write in main body, what is the possibility. पहले तो हम ये बताएंगे कि प्रश्न है क्या ऐसा है, हो सकता है, तो हम बताएंगे कि हाँ भाई हो तो सकता है. अच्छा, होने के चांसेस कितने हैं ये पॉसिबिलिटी में बता देंगे. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, significance of financial inclusion. Significance of financial inclusion in achieving economic growth. In achieving economic growth in India, we will write about it in the second part of the main body. Then for proving our fact or proving our written words, we have to provide some examples or cases और examples कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या सिर्फ ये हवाई बात तो नहीं है. Then in conclusion part, we will provide some positive lines, futuristic lines कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कुछ अच्छी अच्छी सी बातें. Now come to introduction. Inclusive growth in a market economy. Inclusive growth refers, और इसमें भी सबसे पहले हम क्या बताएंगे, what is the meaning of inclusive growth? Refers to economic growth process that benefits a broad spectrum of society, including marginalized and low income groups. While market economies are driven by competition and profit motives, inclusive growth can still be achieved through appropriate policies and interventions that ensure equitable distribution of the benefits of economic growth. तो देखो क्या हुआ, हमने एक और सबसे पहले इसी इंट्रोडक्शन में इंक्लूसिव ग्रोथ को भी बताया, सेकंड मार्केट इकोनॉमी को भी बताया कि यहां तक क्या है, मार्केट इकोनॉमी आर ड्राइवन बाय कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव्स. अब हम इन दोनों में बैलेंस कैसे करेंगे, जो थर्ड लाइन है, मींस ये जो थर्ड पॉइंट है, यहां से ये पॉइंट ये बता रहा है कि हम दोनों में बैलेंस कैसे करें. ना इंक्लूसिव ग्रोथ कैन स्टिल बी अचीव्ड थ्रू अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन दैट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो ये हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता दी है कि भाई हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. ना हाउ पॉसिबिलिटी कैसे है, सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैन इंश्योर फेयर कंपटीशन, प्रिवेंट मोनोपोलीज, protect consumers. This includes labor laws, minimum wage standards, anti-discrimination policies that can help in reducing income inequality and providing better opportunities for all. तो रेगुलेटरी सरकार थोड़ा सा नकेल टाइट करके रखे. सेकेंड, सोशल सेफ्टी नेट्स. Implementation of social safety nets like unemployment benefits, health insurance, pension schemes can protect the vulnerable section of the society. It ensures that they are not left behind in growth process. तो हमें सोशल सेफ्टी स्कीम्स भी चलानी है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी करना है. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. Access to quality education, health care enables individuals to participate effectively in the economy. Fourth, financial inclusion, ensuring that financial services are accessible to all segments of the society is crucial for inclusive growth.
This includes access to banking, credit, insurance, and investment opportunities. Fifth, targeted programs. Programs aimed at uplifting specific marginalized groups, such as affirmative action in employment and education, can help bridge the gap and ensure that growth benefits are widely distributed. सो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी इंक्लूसिव ग्रोथ की मार्केट इकोनॉमी में, उसके लिए हमें कुछ कदम तो चलने पड़ेंगे। वो कौन कौन से कदम हैं उनके बारे में हमने यहां पर बता दिया। तो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है ये बता दिया। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया? Enhanced saving and investment. Financial inclusion brings more people into formal banking sector, increasing savings, investment. This mobilizes resource for productive investment, leading to overall economic growth. तो इस तरीके से सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास क्रेडिट तक पहुंच बनेगी। देखिए पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट लोगों के खुलवाए गए। जिन लोगों के पहले अकाउंट नहीं थे उन्हें डायरेक्ट बैंक लोन तो नहीं दे सकती थी, उनका कोई ना कोई बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट हुआ, वही जो मनी बैंक के पास सेव है वो इन्वेस्टमेंट में भी यूज हो रहा है। एक्सेस टू क्रेडिट, ऐसे लोगों को अब क्रेडिट भी अवेलेबल होगा, मींस उनको फाइनेंस भी मिलेगा, माइक्रो फाइनेंस, मैक्रो फाइनेंस जैसा भी चाहिए। क्रेडिट इनेबल्स स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट, एक्सपेंड एंड क्रिएट जॉब्स। Microfinance institutions and schemes like Mudra Yojana have played a crucial role in providing credit to underserved section in India, in our country. Third is reduction in poverty. Financial inclusion helps in poverty reduction by providing poor with access to financial services like saving accounts, credit, insurance, remittance facilities, which empower them to manage risk, investment and in education, health and small businesses. Then formalization of the economy. By bringing more people into formal financial system, financial inclusion helps in reducing the informal economy, which increases the tax base, leading to higher government revenues, which can be used for development programs. Fifth is women empowerment. Financial inclusion particularly benefits women by giving them control over their finances, thus empowering them economically and socially. Women with access to financial services are more likely to invest in their families' health and education. Okay, then technology and innovation. By using technology, financial services में अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लाइक मोबाइल बैंकिंग, mobile apps, digital payment systems, UPI, has significantly contributed to financial inclusion in India. Initiative like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have leveraged technology to provide banking services to the unbanked. Seventh, economic stability. A more inclusive financial system contribute to economic stability by broadening the base of financial intermediation, which helps in the efficient allocation of resources, reduces vulnerability to financial crisis. So these are 7 important significance point of financial inclusion जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ लाना चाहते हैं अपने देश में और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा रहे हैं। नाउ एग्जांपल्स मींस कौन कौन से केस स्टडीज या कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, it was launched in 2014 and aimed at providing universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household. This has led to the opening of millions of bank accounts, particularly for the poor and marginalized. Second, direct benefit transfer. By linking bank accounts with Aadhaar and mobile, government has implemented DBT to transfer subsidies and benefits directly to the beneficiaries, reducing leakages and ensuring that benefits reach the intended recipients. Then Digital India. This Digital India initiative has promoted the use of digital payments, reducing the reliance on cash and increasing the efficiency of financial transactions. तो आज देखिए सब लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, जीपे हो, फोन पे हो, पेटीएम।
So these are the cases or these are the examples by using which हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा रहे हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है उसको भी देख लिया. Now main question is answered. Now come to the conclusion part. While inclusive growth is challenging in a market economy, it is achievable through targeted policies and interventions. Financial inclusion plays a pivotal role in promoting inclusive growth in India by enhancing access to financial services, reducing poverty, empowering marginalized groups, and ensuring that economic growth benefits all sections of the society. Hence, this question has been answered. If you like our video, please like, share, and subscribe. And also, please provide your precious feedback in the comment box. Thank you.